Today, we are here in a small town of Bellur in Karnataka. बेल्लूर एक छोटा सा कस्बा जो जाना जाता है केशव को समर्पित एक मंदिर के लिए। अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हम निकले हैं मंदिर घूमने। बाकी टाउन्स के जैसे ही सुबह की जिंदगी थोड़ी धीमी है। Chenna Keshava. Chenna in Kannada means beautiful, Sundar, and Chenna Keshava word literally translates to "Oh beautiful Keshav." Yes, you heard it right. We are right now here at one of the most beautiful temples in Belur, Chenna Keshava Temple. Chenna Keshava Temple. It's not just a temple, it's art in its exquisite form. It's a temple which is dedicated to Lord Vishnu and his wives. The Chenna Keshava Temple Complex is a huge temple complex which comprises of four main temples. The main temple is the center temple which is dedicated to Lord Vishnu and is known as Keshava Temple, whereas two temples on either sides of the main temple are dedicated to his wives, Sri Devi, which is Mahalakshmi, and Bhumi Devi, which is the earth itself. And the temple at back of the main temple is Veer Narayan Temple. This temple was constructed 1100 years ago by King Vishnuvardhan. Vishnuvardhan was the then king of Hoysala Empire, and he commissioned this temple to commemorate his victory over the mighty Cholas. We enter the temple complex from East Gopuram, which is a 5-storied structure. The open space in the Chennakeshwar temple complex houses Garud Stambh, an anti-gravity pillar. Entrance to the temple is flanked by 2 small shrines. These small shrines are also dedicated to Lord Vishnu himself. And the shrines are followed by the emblems of the Hoysala Empire. आपको टेंपल की एंट्रेंसेस पे मेन डोर के दोनों साइड्स पे यह स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यह स्ट्रक्चर काफी साउथ इंडियन टेंपल्स में मिलता है, स्पेशली जो होयसलास ने बनवाए हैं। यह है राजा साल, जो कि होयसला के पहले राजा थे। इस होयसला के राज चिन्ह में आप राजा साल को शेर से लड़ते हुए देख सकते हैं। And the emblems are followed by the Dwarpals of Vishnu. Entrance door of the temple is coronated with beautifully carved Makar Toran. What is Makar? मकर का मतलब मगरमच्छ नहीं है। मकर इज अ लेजेंडरी एनिमल और मकर को वरुण देव का वाहन भी माना जाता है। शेर के पांव, वाराह का शरीर, मोर सी पूंछ, मगर का मुंह, बंदर की सी आंख, हिरण या गाय के कान और हाथी जैसी सूंड। वास्तव में मकर की आकृति कुछ रहस्यमयी सी है। Now let's go inside the Keshav temple. There are 48 pillars inside the Keshava temple, out of which 3 are very famous: the Narsimha pillar, the Lakshmi pillar, and the Mohini pillar. None of the pillars have the same ornamentation, all have different designs. That is the beauty of Keshava, Chenna Keshava. केशव मंदिर में 3 मेन पिलर्स हैं, जिनमें से इस पिलर को नरसिम्हा पिलर कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नरसिम्हा का एक बहुत छोटा सा विग्रह है, पर बहुत ही अच्छे से बना रखा है, और इस पिलर के ऊपर बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स है। Once upon a time, this used to be a rotating pillar. Yes, you heard that right. Rotating pillar. If you can see, this is a ball-bearing mechanism, जिसके कारण ये पिलर रोटेट करता था। बट सम टाइम बैक शिखर के ध्वस्त होने के कारण यह पिलर अंदर धंस गया है, जिसके कारण यह रोटेट नहीं हो पाता आज के लिए।
such detailed carvings exemplify the beauty of this temple. There is the second most famous pillar. इसको मोहिनी पिलर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मोहिनी जो कि भगवान विष्णु का अवतार हुई थी समुद्र मंथन के समय, उनका विग्रह है. You can see she is very beautiful. Look at the ornaments and look at the Amrit Kalash she is holding. And this is the third most famous pillar in the temple complex, dedicated to none other than the wife of Lord Vishnu, Sri Lakshmi. गर्भगृह के बाहर केशव के 2 द्वारपाल जय और विजय की प्रतिमाएं हैं. जैसे केशव वैसे ही उनके द्वारपाल दिव्य, चतुर्भुज, चक्रधर, गदाधारी. और द्वारपाल के ऊपर है मंदिर का सबसे सुंदर शिल्पित मकर तोरण. यह सब देखकर लगता है कि चिन्नकेश्वर सिर्फ विग्रह में नहीं वरन मंदिर के अंग प्रत्यंग में बसे हैं. गर्भगृह के बाहर नृत्य मंडप के ठीक ऊपर एक हैंगिंग पिलर है जिसमें नरसिंह का विग्रह बना हुआ है. पीपल ऑफन कंफ्यूज इट विद नरसिम्हा पिलर. इस शिखर के चारों कोनों में मदनिकाओं की 4 अद्भुत प्रतिमाएं हैं. Originally there were 40 Madanikas, but today only 38 remain. Madanika, Shilabalika, Apsaraएं, celestial nymphs. What are these Madanikas? So Madanikas first of all are both male and female figures. Madanika word comes from the word Madan. Madan का मतलब होता है exquisite pleasure. So a person who is able to provide exquisite pleasure to any person is known as Madanika. वह प्लेजर म्यूजिक के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअल डिजायर्स के थ्रू हो सकता है, डांस के थ्रू हो सकता है, एंड इट कैन बी फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट. और इस टेंपल के ऊपर आपको मदनिकाओं की बहुत सुंदर आकृतियां कार्व करी हुई मिलेंगी. लेट अस शो यू सम ऑफ देम. Madanika looking into the mirror, a huntress with the skull staff, playing flute, playing mridang, a dancer, playing with a pet monkey, a male Madanika. And some of these show the intricate details that we can't even think of. Look at the lizard chasing an insect sitting on a fruit. No doubt, this entire temple complex is an embodiment of Hoysala's art and craftsmanship. This entire architectural marvel is built using soapstone. Soapstone is a kind of stone which is soft when quarried but hardens over time. The temple artwork depicts the pictorial narration of our Sanatan texts such as Ramayana, Mahabharata and various Puranas. Come, let us show you some of the stories narrated on the panels of the outer walls of this temple. Here we can see the portraiture of King Vishnuvardhan himself sitting in the court along with his wife. और यहाँ पर हैं शेषशायी विष्णु जिनके नाभि कमल में हम ब्रह्मा को देख सकते हैं. और यह है भीम अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करते हुए. और यहाँ पर दर्शनीय है कृष्ण लीलाएं और कंसवध की कथा. और यहाँ दर्शाया गया है हनुमान और गरुड़ को शिवलिंग के लिए लड़ते हुए. And now let's move on to some of the monoliths and their tales. ज्यादातर मंदिरों में हम गणपति को एक बैठे हुए या चूहे के ऊपर बैठे हुए फॉर्म में देखते हैं. यहाँ पे अगर आप देखेंगे गणपति तांडव डांस के फॉर्म में हैं और वो है तो मूषक के ऊपर पर उनका जो स्कल्पचर बना हुआ है पूरा का पूरा तांडव डांस करते हुए बनाया हुआ है. और इसी विग्रह के एकदम ऊपर इस मंदिर का सबसे फेमस विग्रह वो है नरसिंह स्वरूप जो आपको मंदिर की अलग अलग दीवारों पे और पिलर्स के ऊपर देखने को मिलेगा. नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे जिन्होंने हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध किया था. मूर्तिकार के काम की बारीकी को इस विग्रह में देखा जा सकता है.
16 भुजाएं हिरण्यकश्यप गोद में और नरसिंह की 2 भुजाएं उसका पेट फाड़ते हुए। और यह श्रृंखला जो नरसिंह के गले में दिख रही है, यह है हिरण्यकश्यप की आंतें। और उसी दीवार पर आपको आगे विष्णु के तीसरे अवतार वाराह, चतुर्मुख ब्रह्मा कमंडलू लिए हुए, महिषासुर मर्दिनी, दक्ष प्रजापति जैसी और भी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। आपको एक और कहानी के बारे में बता दें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे शिव का एक और रूप है, और देखिए शिव ने त्रिशूल से एक राक्षस को उठा रखा है। सो वो जो असुर है, उस असुर का नाम है अंधकासुर। तो शिव ने जब अंधकांतक नामक रूप धारण किया था और उन्होंने अंधकासुर का वध किया था, दैट स्टोरी इज बीइंग डिपिक्टेड हियर। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो दुर्गा का एक बहुत ही फियर्स फॉर्म है जो कि चामुंडा है। चामुंडा मतलब जिसने चंड और मुंड का नाश किया था। और इसी वॉल के ऊपर अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको दशग्रीव, जिसे रावण भी कहा जाता है, कैलाश पर्वत उठाए दिखेगा। कैलाश पर्वत के ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए हैं, और यहाँ पे उसने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा रखा है। So as you can see, this temple has one more form of Shiva here, and this is none other than तांडवेश्वरा, जहाँ पे शिव तांडव नृत्य करते हुए अपस्मार नाम के एक असुर का वध करते हैं। महाभारत का एक सीन है जहाँ पे अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में जाता है। नीचे एक बाउल होता है जिसमें पानी है, और उसके अंदर ऊपर मछली की आंख, उसकी छाया दिखती है, और उसे मछली की आंख पे तीर मारना है। This scene is very well carved and inscribed here. मंदिर की बाहरी दीवारों पर आपको छोटी छोटी मूर्तियां 2 परतों पर दिखाई देंगी। ये मूर्तियां देवी और शिव के विभिन्न स्वरूपों की हैं। यहाँ पर जो मूर्ति आप देख रहे हैं वह भैरव की है। इसका पता आपको उनके गले में सुशोभित मुंडमाला, पैरों में लिपटे नाग और वाहन श्वान से पता चलता है। बाकी अन्य मूर्तियां योगिनी और यक्षों की भी हैं। Each sculpture seen here is a masterpiece in itself. Sadly, some of the work seen here is destroyed, while some is stolen. Can you see a woman sketching on a drawing board? She is a yogini named Chitralekha. You can see different bands inscribed on the outer walls of the temple. There are 8 bands inscribed. The lowest one has elephants, followed by lions, then horsemen, then scroll, then yoginis and yakshas, followed by celestial deities, followed by scenes from epics like Ramayana, and then the scenes from daily life depicting dharma, earth, काम, मोक्ष. At the back wall of Chennakeshwar temple, there is a huge shrine which is a temple in itself, and it is also dedicated to Lord Vishnu. Outer walls of the temples are not just about the big monoliths, but also about the smaller sculptures which have their own tales to tell. And we think that it is these legends and this artistry that draws the attention of the crowds even on the hottest of summer days. So far we have covered the main Keshwa temple in this temple complex. Let us move on to cover some other temples. Rangnayaki Temple. Even though Chennakeshwar is the main temple over here, but यहाँ पर आपको जो है 2 और मंदिर मिलते हैं जो कि विष्णु की वाइफ्स को डेडिकेटेड है, भूदेवी और श्रीदेवी, जिनको महालक्ष्मी भी कहते हैं। अभी हम लोग भूदेवी टेम्पल के पीछे खड़े हैं, जिसको रंगनायकी या अंडाल टेम्पल भी बोलते हैं।
और जो महालक्ष्मी का टेम्पल है जो दूसरी साइड में है केशवा टेम्पल के, उसको सौम्या नायकी टेम्पल भी बोलते हैं. Now the carvings on the Keshwa temple are very beautiful, definitely, but the carvings on these two temples are also noteworthy. Let us show you some of the works. So if you see here, this is Lakshmi Narayan. You can just see the intricate carvings, the jewelry, the posture in which the deity is seated. Here is Krishna. If you see his Vajanti Mala, it's very beautifully carved. And finally, here we have Vara avatar of Lord Vishnu. You can see even the teeth have been carved. Towards the extreme left of the Keshwa temple is Kappe Chenigaraya. And besides Kappe Chenigaraya lies Somanayaki temple. Somanayaki is the first wife of Lord Vishnu, also known as Sri Lakshmi. And besides Somanayaki temple is Kalyan Mandap, whose entrance is flanked by two beautifully sculptured elephants. So this is the elephant that we were talking about. Look at the ornamentation that has been carved on this elephant. The whole ropes that you can see over here. On his legs also you can see the ornament that they used to wear at that time. And the most beautiful is the bell that you can see over here. तो कल्याण मंडप क्या है? कल्याणम का अर्थ होता है विवाह. कल्याण मंडप वह मंडप है जहां पर वैदिक रीतियों से विवाह होता था. कल्याण मंडप और रंग नायकी के बीच में आता है वीर नारायण मंदिर, जो कि साल में एक ही बार खुलता है. और चलिए अब बात करते हैं एंटी ग्रेविटी पिलर की. There is a conception or there is a notion around कि इसके नीचे से अगर आप पेपर पास करते हैं तो वो पेपर पास हो जाता है. But actually it is not like that. It's just that कि इसका जो नींव है वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये पिलर जो है वो एकदम इरेक्ट खड़ा रहता है और कोई भी हवा कुछ भी आए तो ये हिलता नहीं है. So that is the speciality of this anti-gravity pillar. This is the complete summary of the temple complex. We have covered all the places that you should look out for when you're on a visit to Chennakeshwar temple in Belur. Also, during our visit to the temple, we were lucky enough to witness an auspicious event, Rath Yatra. रथ यात्रा सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला ध्यान पुरी का आता है, लेकिन दक्षिण भारतीय मंदिरों में रथ सप्तमी के दिन रथ यात्रा आज भी निकाली जाती है. चन्नकेश्वर की रथ यात्रा देखने के लिए आसपास के गांव से श्रद्धालु यहाँ काफी संख्या में आते हैं. So this was an entire account of our visit to Chennakeshwar temple, Belur. मंदिर तो कुछ घंटों में भी घूमा जा सकता है, but it might take days to appreciate the art. While the West was learning art, our ancestors were already playing with the divinity, carving masterpieces in stones.